Okay, um, let's practice. Here we have a passage. Let's read it. I hope you people can read it on your screens easily. Yes. ये maximum मैं कर सकूंगा. Sorry. When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound with the existence of other human beings. We notice that whole nature resembles that of the social animals. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, live in houses that others have built. It has 3 pages. Page 2. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us. Has been passed on to us by other people through the medium of a language which others have created. Without language and mental capacities, we would have been poor, indeed comparable to higher animals. We have, therefore, to admit that we owe our principal knowledge, over the least, to the fact of living in human society. Next. The individual, if left alone from birth, would remain primitive and beast-like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. The individual is what he is and has the significance that he has, not much in virtue of the individuality, but rather as a member of a great human community, which directs his material and spiritual existence from the cradle to grave. 190 words. I think we need to do a second reading. I'm going back to page 1 so that we have some idea. When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. एक बात की हमें समझ आ गई कि हमारी connection है बाकी human beings के साथ. We notice that whole nature resembles that of the social animals, all nature. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, live in houses that others have built. मैं चाहूंगा कि इस पेज के हम major और minor points यहीं पे अलग कर लें. मेरे ख्याल में इसका when we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our action and desires. तो इसमें ये जो point है, the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. ये वाला इतना जो है मेरे ख्याल से अंडरलाइन होना चाहिए. वो शुरू में जो लिखा है when we survey our lives and efforts, वो इस तरह से काम का नहीं है कि उसका किस मकसद के लिए वो कहा गया है. इस मकसद के लिए कहा गया है almost the whole से human beings तक. We notice that the whole nature resembles that of the social animals. Okay, ये topic sentence को supporting point जो है वो दिया गया है. Social animals. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, and live in houses. अब 3 examples यहाँ पे दी गई हैं. Food, clothes, रोटी कपड़ा मकान. और उसको तमाम जो है वो dependent है दूसरों पे. पिछले sentence के साथ उसको मिलाएं. This means कि ये examples हैं और इनको हमें शायद इस तरह से सेंटेंस बनाना चाहिए कि हमें एग्जांपल्स लिख के बगैर इस पॉइंट को हम कन्वे कर सकें. नेक्स्ट. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us by other people through the medium of a language which others have created. इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज के बगैर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और लैंग्वेज क्या है दूसरों ने क्रिएट की है. सो इस पे भी हम दूसरों पे डिपेंडेंट है. अकेला आदमी लिंग्विस्टिक्स में हम पढ़ते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जब अगर कोई शख्स तन्हाई में चला जाए, बच्चा ही बचपन में उसको डाल दिया जाए तो वो लैंग्वेज नहीं डेवलप करता. तो एक दूसरे से साथ रहने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है और वो भी हम दूसरों से सीखते हैं. ये इसका पॉइंट है. विदाउट लैंग्वेज एंड मेंटल कैपेसिटीज
we would have been poor, indeed comparable to higher animals. So दो चीजें हमारे पास हैं अशरफुल मखलूकात होने के लिए, एक लैंग्वेज है और दूसरी है mental capacities. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society. So हमारे पास अगर कोई knowledge है तो किस वजह से है? लैंग्वेज की वजह से, और लैंग्वेज किस वजह से है? दूसरों की वजह से. सो हमें अपनी जो इल्म है और हमारी जो लैंग्वेज है वो डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे. इस पैसेज से हमें ये समझ आती है. थर्ड, द इंडिविजुअल इफ लेफ्ट अलोन फ्रॉम बर्थ वुड रिमेन प्रिमिटिव. अब ये वो बात आ गई कि अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए, would remain primitive and beast-like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. Main point इसका क्या बना? If left alone, man would be like primitive and like beast. The individual is what he is and has the significant. ये देखें long sentence है ये, पूरा आखिर तक चलेगा. The individual is what he is and has the significance that he has. यानी individual की अपनी अहमियत अपनी जगह पे है. Not much in virtue of the individuality, but rather as a member of a great human community. इंसान की अगर कदर है तो इसलिए है कि वो दूसरों के साथ किस तरह से रहता और पेश आता है, इसलिए नहीं कि वो बजाते खुद क्या चीज है. Which directs his material and spiritual existence from the cradle to grave. So ये वो एहसास है जिसकी बुनियाद पे उसको material और spiritual existence उसको मिलती है कि वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह से पेश आता है. उसके अलावा अपनी सिर्फ पर्सनैलिटी के लिए रहना है तो फिर वो सोशल एनिमल वो नहीं रहता. वो क्या ख्याल है, मेन आइडिया क्या है इसका? इंसान की डिपेंडेंस सोसाइटी पे और किस तरह से सोसाइटी जो है वो इंसानों से बनती है और इंसानों को ही कंडीशन करती है, और इंडिविजुअल जो है वो अपनी मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. इंसान अपनी जो है वो हैसियत में ठीक है, उसकी अहमियत तो बहुत है, लेकिन फिर उसकी अहमियत जो है वो सोशल इन्फ्लुएंसेस. वापस जाएं शुरू में तो हमें समझ आती है कि उसके सारे एक्शंस और डिजायर्स किस वजह से है? एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स. ये मेरे नजदीक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर उसकी जिंदगी में एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स मौजूद है, देन ही कैन डेवलप एज ह्यूमन बीइंग. होल नेचर. अब व्हाटएवर, मेरे ख्याल में ये जो तीन फिक्रे थे, फूड, क्लोथ्स और हाउसेस वाले, इसका ये है कि व्हाटएवर ही कंज्यूम्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स. मेरा इसमें ये ख्याल है. द ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज. अब हम आ जाते हैं नॉलेज और लैंग्वेज पे. जो सेकंड पॉइंट है इस प्रेसी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज एंड लैंग्वेज. द नॉलेज दैट ही रिसीव्स अबाउट द वर्ल्ड इज गिवन बाय द अदर्स. How he interacts with society is through the medium of language. And who created language? Others have given him the language. So it is basically these, and if he did not have language, and if he does not have mental capacities, that would be just like the life of higher animals. Therefore, our principal knowledge is due to the fact of living in human society. अब आपके जहन में थोड़ा सा इसका मेन पॉइंट्स भी आ रहे हैं और इसका टाइटल भी थोड़ा सा आपके जहन में जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. थर्ड पॉइंट ये है कि अकेले रहे तो उसमें जानवरों की तरह से ना उसके अंदर neither thoughts nor feelings, then we can hardly imagine, we cannot even imagine that how much beast like, how much animal like the individual can grow if left alone. So that is why, even though the individual is significant, is important, and his individuality is also very important for society, but at the same time it is society which ultimately gives him his material and spiritual existence from birth till death. मेन पॉइंट्स को एक दफा लिख लेते हैं जरा. Man's existence is closely linked with other human beings. हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं इसको पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स आए हैं. मैंने वो जो था ना फूड, रोटी कपड़ा मकान वाला जो पूरा सेंटेंस था, उसको मैंने शॉर्ट किया. मोस्ट ऑफ व्हाट ही कंज्यूम्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स. उसके तमाम जो इस्तेमाल में व्हाट ही कंज्यूम्स
कंजम्पशन है ना, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, हाउस हो गया, तो वट एवर ही यूजेस और कंज्यूम्स, हिज नॉलेज इज डिपेंडेंट। नॉलेज किस पे, अब देखें दो दो बातें हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नॉलेज सारा is dependent, knowledge is directly comes from the people, knowledge comes through the medium of language. So यहाँ पे आपको दो steps create करने पड़ेंगे, that he receives knowledge, but how does he receive knowledge? Through language. हैवाने नुत्क, पहले लैंग्वेज पैदा की और उसके बाद खुदा ने जो है वो कुरान दिया, पहले लैंग्वेज की समझ दी और उसके बाद चल के तो पैगाम भेजा अपना। His knowledge is dependent on the medium of language which is created by others. अच्छा, अब कंडीशन इंसान, मेरे ख्याल में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि by living with other humans man follows the social rules of living in society. Social influences give human beings ability to live in society. So अब यहाँ पे कंडीशनिंग, ये सेंटेंस जरा गौर कीजिएगा, I have used my own words. By living with other human beings, man follows the social rules of living in society. Social rules को follow करता है, and social influences give human beings ability to live in society. If you see it carefully, I have already produced the main ideas in my own language here in these points. लेकिन ये थोड़ा लंबा है अभी अभी जब आप मेन पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको उसकी लेंथ की फिक्र नहीं है, अभी हम 1/3 के चक्कर में नहीं है, अभी हमारे मेन फोकस होना चाहिए टू गेट द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट, if left alone human beings would feel and live just like animals. If people are left alone without society. And the last point, although every man has his own significance, yet it is more as a part of the society which gives him material and spiritual existence rather than in his own personal capacity. जो point पहले हमने इसको explain किया है, but now I have written it in my own words. You can see that this I get very easily distracted. What are the words that I have in main points में आपको, what is the language that I have taken from the main passage? Our, देखें किस तरह से हम इसको थर्ड में कर गया हूँ, ये मैं अनकॉन्शियसली इस पॉइंट को मैं आपको हाईलाइट कर दूं, that सारा वो जो पैसेज था, let's look at it. ये देखें, we survey our lives, our actions, we eat food. Next, our knowledge, everything, but we have therefore to do, we owe, and things like that. But when I have done it, I have turned it, changed it into the third person. और थर्ड पर्सन में हम उसको मैन, ह्यूमन बीइंग और इस तरह से ह्यूमंस कह के तो हम उसकी जो है वो बात कर रहे हैं. एंड सो दिस इज क्वाइट वर्डी बट इट गिव्स द मेन पॉइंट्स. अब इसको शॉर्ट करना है और आपके ख्याल में क्या लेंथ होनी चाहिए? दिस इज 190 वर्ड्स. I think something like 65 to 66, 67 words would be 1/3 of this. It was 190 words. So इसको अगर आप डिवाइड करें तो 63 to 65 words is good enough. 65, let's take it. So I wrote a summary of this, a précis of this, solve précis. I think man's existence is closely linked with other humans. अब मैंने अवॉइड क्या कुछ किया है, मैं आपको कंपेयर करवाता जाऊंगा. Man's existence is closely linked with other human beings. मैंने being काट दिया. Most of what he consumes is produced by others. ये शॉर्ट नहीं था हो सका, ये ऑलरेडी काफी कंसाइज था. His knowledge is dependent on language created by others. जरा गौर करें, सेंटेंस में वापस जाऊंगा मैं इसको लेके. His knowledge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 words. His knowledge is dependent on language created by others. इसको पहले किस तरह लिखा था? His knowledge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. पहले 14 वर्ड्स थे, शॉर्ट करके इसी को विदाउट, देखिए मैंने काटा क्या है. His knowledge is dependent on the medium of language which is extra है यहाँ पे, created by others. So इस तरह से आप शॉर्ट करते हैं लैंग्वेज को. Social influences give humans ability to live in society. यहाँ पे S होना चाहिए था. Social influences
give humans ability to live in society? एक लेटर बढ़ाने से हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बढ़ता. Social influences give humans ability to live in society. ये पहले क्या था? By living with other humans, man follows the social rules for living in society. Social influences give human being. तो वो rules वाली बात actually इसी के अंदर आ गई. Do you think ये social influences में यहाँ पे social influences give humans ability to live in society. If man is left alone, he would feel and live like animals. वापस जाएंगे. If left alone, human beings, अब human beings कहना दो लफ्ज, humans एक ही चीज, would feel and live just like animal. just कहने की जरूरत नहीं है, like animal से बात हो गई है हमारी. Although every human is significant, it is more as a part of society which gives him material and spiritual existence. Let's compare it with the longer sentence. Although every man has his own significance, yet it is more as a part of the society which gives him material and spiritual existence rather than his own personal capacity. यहाँ पे अटेंड करने वालों में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो जिन्होंने प्रेसी पहले मुझसे जो है पढ़ी हुई है, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस लेके तो उनको हम कहा करते थे वर्डीनेस है, ये बहुत ज्यादा अल्फाज हैं, आप इसको शॉर्ट करें. तो अब आपके सामने वो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि लास्ट सेंटेंस देखिए, इट वाज समथिंग लाइक 4 लाइंस, अ लॉट ऑफ वर्ड्स, और उसको हमने शॉर्ट किया. Although every human is significant, it is more as part of society which gives him material and spiritual existence. 66 words, which I think is a fairly suitable number of words for this. अब हम इतना ज्यादा टॉपिक को हमने स्टडी कर लिया है, उसको बार बार उसके हमने अपने वर्ड्स दिए हैं, सब कुछ किया है, and I think you should not be allowed to annotate. Somebody is experimenting. Okay, so we have appropriate titles. मेरे ख्याल से man cannot live alone is one. Man as a social animal is another one. Okay, man as a social animal. अब हम सोच रहे थे ना, तो सोचते we are humans because of society, and then social influence make us influences. Social influences ये make us human. Which one do you think? आप किसके साथ एग्री करेंगे? कौन से वाले जो हैं वो बेहतर आपको लग रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है वी आर ह्यूमंस बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ऑल्दो ये कंप्लीट सेंटेंस भी है, लेकिन ये एक हेडिंग के तौर पे भी आ सकता है. मैन एज अ सोशल एनिमल बहुत जनरल किस्म का है, उसमें ठीक है, मतलब तो आ गया है. मैन कैन नॉट लिव अलोन कम है, इट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द प्रेसी. मैन एज अ सोशल एनिमल बहुत जनरल है, कुछ भी कहा जा सकता है इसके ऊपर. वी आर ह्यूमंस बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ओके, एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस make us human. I would go for this fourth one, social influences. Social influences make us human. I think this would be an appropriate title, and I will select just one. ये ख्याल रहे कि हमने टाइटल सिर्फ एक देना है. सोशल इन्फ्लुएंसेस मेक अस ह्यूमन, हमें और इसमें ह्यूमन की डेफिनेशन भी आ गई और सोशल इन्फ्लुएंसेस भी आ गए, और फिर उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन के ऊपर, बेसिकली ये नहीं कि ह्यूमन मेक्स सोशल इन्फ्लुएंसेस, नो, सोशल इन्फ्लुएंसेस, और सोशल किससे बनता है? ह्यूमन से, और ह्यूमन सोशल इन्फ्लुएंसेस फिर उसको, सो ये साइकिल जो है इस टाइटल के अंदर जो है वो नजर आता है. सो दैट्स ऑल, थैंक यू, and we go back to our feed, stop sharing this, and here we are. I will stop the recording now. I guess we are all very tired. We have had a very long and very concentrated class,
I'll try to put this recording on the Facebook page also, and in the 2 sessions. Thank you, and I will wait for your questions. Okay. See you next time, next Sunday.